हेलो फ्रेंड्स, आज आम चाइल्ड डेभलपमेंट पेडागोजी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ये क्वेश्चन गुड़िक आपंकर प्रीवियस ईयर ओस्टेट एग्जाम आसाला और ये भिडटी आपंकर अपकमिंग ओस्टेट एग्जाम आ सहित ओटीईटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रही। तो चलते स्टार्ट करवा किसी क्वेश्चन। सो आमर फास्ट क्वेश्चन कहला अकॉर्डिंग टू पियागेट मैच्यूरेशन ए और आन ताले अकॉर्डिंग टू पियागेट मैच्यूरेशन गोटे कौन ना ऑप्शन ए जो राइट आंसर ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस। ताले अकॉर्डिंग टू पियागेट मैच्यूरेशन इज ए ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू पियागेट डेवलपमेंट रिक्वायर ताले अकॉर्डिंग टू पियागेट डेवलपमेंट रिक्वायर्ड मैच्यूरेशन लर्निंग एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट ये तीन टांग हो हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू कोलबर्ट्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड हिज वेरियस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ प्रपोज बाय हिम। ताले कोलबर्ग थ्योरी अनुसार या भितर कोटा ठीक नुहे पचार ऑप्शन सी है जो राइट आंसर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट यहाँ भाई गोट्सकी कहते यहाँ आम कोलबर्ग कथा नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which state of Piaget's theory of cognitive development is characterized by abstract logic and potential for mature moral reasoning। ताला abstract logic आसगला माने सेटा हमर फॉर्मल ऑपरेशनल ऑप्शन डी है जो राइट आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट स्टेज आर क्लोजली रिलेटेड टू। ताले कोलबर्गर मोरल डेवलपमेंट स्टेजटा क्लोजली रिलेटेड टू ऑप्शन सी है जो राइट आंसर सुलेभान्स इंटरपर्सनल स्टेज ऑप्शन सी है जो राइट आंसर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पियागेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विथ पियागेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अनुजाई सेंसरी मोटर स्टेज एसोसिएटेड विथ आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनिशिएशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रेन बाय ऑप्शन ए है जो राइट आंसर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग ताले इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग एटा किए देथिले ना गेस्टाल्ट थ्योरीज देथिले गेस्टाल्ट थ्योरीज देथिले ऑप्शन डी है जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ ताले डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस एटा हो हमर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑप्शन ए है जो राइट आंसर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट या भितर कोटा इनकरेक्ट वे पचाला इनकरेक्ट ठीक नुहे भूल अच्छी ऑप्शन बी है जो राइट आंसर डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज यहाँ आमर भूल किंतु प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज एटा ठीक हम सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रेन एटा ठीक हम लेटिंग चाइल्ड टॉक इंटरप्रिटेडली ऑन द टॉपिक एटा ठीक हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अंडरस्टैंडिंग फॉर ह्यूमन नॉलेज and development enables teacher to ताला understanding of human knowledge and development enables teacher to option C है जो right answer be clear about teaching diverse learners। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला which of the following is true about the role of heredity and environment in the development of child ताला कौन पचला आ भितर कोटा ठीक अच्छी द रोल ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पाई ऑप्शन बी है जो हमारा राइट आंसर द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव ऑप्शन बी है जो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेबल सोशल इंटरेक्शन दिस इज ओपिनियन ऑफ आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट सीयर्स ताले डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेबल सोशल इंटरेक्शन एटा किए कहते रॉबर्ट सीयर्स कहते ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द सेकेंडरी बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सीयर्स स्टार्ट विथ ताले सेकेंडरी बिहेवियर रॉबर्ट सीयर को अनुसार सेकेंडरी बिहेवियर गोटे पिलार कौन ना इमिटेशन ऑप्शन बी है राइट आंसर इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड ताले 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड पाई बेस्ट प्लेस कोटा ना प्लेग्राउंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विथ इमोशनल डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विथ इमोशनल डेवलपमेंट ताला हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इमोशंस आर अनरिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देयर इज वन थिंग कॉमन इन लैंग्वेज एंड फिजिकल डेवलपमेंट
व्हाट इज दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्पोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट एज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला सोशल डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय आंसर इज ऑल ऑफ दिस ताले सोशल डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय ऑप्शन ए हला द फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी बी हला द एंड ऑफ सॉलिटरी प्लेज सी हला द टेम्परामेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडलीनेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला which of the following is not the characteristic of intellectual development of early childhood ପାଇଁ intellectual development ର early childhood ପାଇଁ आ भितर कोटा ठीक नुहे पचार ताला आंसर हे जो ऑप्शन नंबर बी सी हे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हबा हमर राइट आंसर ability to verbalize all known concept नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द नेचर एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ मीरा इज द बेस्ट अमंगस्ट हर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ताले नेचर एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ मीरा इज बेस्ट तांको सांगो मानक भितर मीरार नेचर और सोशल एडजस्टमेंट सब भल रोज कहीं ना मीरास लैंग्वेज इज वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन डी इज राइट आंसर मीरास लैंग्वेज इज वेरी अट्रैक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए adolescents may experience ताला adolescent कौन ना adolescent होची anxiety and concern about themselves ऑप्शन डी है जो राइट आंसर anxiety and concern about themselves नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन कहला डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ नाउ एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू नाउ and what the child can do with adult guidance or that of more capable peers is known as a zone of option C is your right answer proximal development option C is your right answer proximal development next question देखिबा adolescent get pleasure next question कहला adolescents get pleasure answer is all of the above tala adolescents get pleasure in the company of their friends by examining their body structure and physics in the company of opposite sex tala adolescent get pleasure option D है जो राइट आंसर तीन टांग है हमरा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इमोशनल टेंशन इन यूथ इज द रिजल्ट ऑफ ताले इमोशनल टेंशन ऑफ इन यूथ इज द रिजल्ट ऑफ ऑप्शन डी है राइट आंसर ऑल ऑफ द अब conflict between idea and ego prejudice against him on the ground of creed or clown repeated in school examination next question देखिबा adolescents show their emotion of love for answer is option number D their friends their country their heroes ताला adolescent show their emotion of love for their friends country hero next question देखिबा next question कहला physical development of later childhood is marked with ऑप्शन डी है जो राइट आंसर ताल फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड विद ऑप्शन डी है जो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस परमानेंट टीथ है जो आसिफिकेशन ऑफ बोन्स है जो एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी है जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केयरफुल फॉर नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सिस्टमैटिक चेंज इन द मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाई all learning and performance is referred to answer is option number B cognitive development next question कहला which of following advancement would be new to a child reaching the pre-operational stage answer is option number B the ability to consider past and present activity ताले pre-operational stage रे the ability to consider past and present activities next question देखिबा according to Piaget the middle childhood years bring a new set of skills concrete operation that answer is option number D provide general abstract rules and strategies for examining and interacting with world answer is option number D next question देखिबा in contrast to the elementary school child an adolescent who has developed formal operational thought can answer is option number D think about possible outcome think systematically about the future imagine future consequence of her action next question देखिबा according to Erikson successful resolution of the identity versus role confusion conflict faced in adolescence leads to which of the following virtues answer is option number C the ability of commit oneself next question देखिबा according to Erikson dash is the ability to fuse one's identity with someone else without fear you are going to lose yourself intimacy option is C next
आंसर हो इंटीमेसी ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए चाइल्ड हु से इट इज रॉन्ग टू स्टील बिकॉज सी माइट गेट कॉट वुड बी इन कोलबर्ट डैश स्टेज आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए टीनेजर हु बिगिन्स यूजिंग alcohol because all his friends are doing it is probably in Colbert's dash stage answer is option number C good boy or good girl morality। next question देखिए at what level of moral development are the rules and standards of society internalized and held as one's own answer is option number C post conventional। next question देखिए critics of Kohlberg claim that his theory reflects all the following except answer is option number B an age bias answer is option number B an age bias। next question देखिए according to Piaget children in the concrete operational stage have a difficult with concrete operational stage रे Piaget को अनुसार कोटा difficult हुए तांके ना option B है जो राइट आंसर और deductive logic ऑप्शन बी है जो राइट आंसर डिडक्टिव लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियागेट वाजे ताले जीन पियागेट जने होउछन जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट ऑप्शन डी है जो राइट आंसर जीन पियागेट वाजे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चिल्ड्रेन बिगिन टू डेवलप सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द डैश सब स्टेज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यारली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the ability to systematically solve problems emerge during the ability to systematically solve problems emerge during the answer is option number C formal operational stage the ability to systematically solve the problem emerge during the formal operational stage गोटे पिला कौन करे systematically problem को solve करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Piaget believed that children in the pre-operational stage have difficulty taking the perspective of another person this is known as egocentrism option B is right answer egocentrism। next question देखिए Piaget assumed that children are dash in constructing understanding of the world answer is option number B active answer is option number B Piaget assumed that children are active in constructing understanding of the world। next question देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अकॉर्डिंग टू पियागेट adoption is the process of adjusting schemes by means of assimilation and accommodation option D है जो राइट आंसर assimilation and accommodation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू पियागेट planned problem solving moves from trial and error to a planned approach in dash stage of development answer is option number A sensory motor stage of development। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा an age scale of intelligence was first developed by ताले age scale developed by Spearman option A is your right answer Spearman। next question देखिबा who propounded two factor theory of intelligence Spearman option A is your right answer two factor theory of intelligence Spearman। next question SI model of intelligence was given by IP Guilford in 1966 ताले SI model of intelligence was given by IP Guilford in 1966। next question देखिबा Freeman considered intelligence as an ability ताले Freeman considered intelligence as an ability to adjust in an adverse situation to learn better and faster to manipulate abstract material। next question देखिबा next question कहला which one of the following would most directly affect the development of intelligence answer is option number C diet deficiency in the expect। next question देखिबा single factor theory of intelligence given by single factor theory Alfred Binet option A is your right answer। next question concept of multiple intelligence होची Gardner option C is your right answer। next question intelligence and creativity are positively related option A is your right answer। next question देखिए dash intelligence is the ability to understand and discern the feelings and intention of others while dash intelligence is the ability to understand one's own feeling and motivation answer is option number A interpersonal and interpersonal। next question देखिबा next question कहला in the pre-Binet period intelligence was considered as in pre-Binet period intelligence was considered as answer is option number A sensory ability of the individual option A is right answer। next question non-verbal test of intelligence is suitable for answer is backward children non-verbal test of intelligence suited for backward children option C is your right answer backward children। next question देखिबा in multi-factor theory range is related to
आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ टैक्स दैट ए पर्सन कैन डू इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर नोइंग इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस मेंटल रिटार्डेशन एजुकेशनल बैकवर्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जेंडर फॉर्मुलेटेड ए लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंसेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ देम। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इमोशनल इंटेलिजेंस ऑप्शन डी है जो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्कोर्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी fully relied on because answer is option number D all of these। fatigue level can influence the performance, cultural factors can influence the score, they generally do not reveal all the mental ability of a person। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड ताल पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑप्शन ए है जो हमर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये था लास्ट क्वेश्चन जब वीडियो भल लगी भिडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।